Hey guys, what's up? Welcome back to this new video. जिसमें we will be talking about a technique. Last video we have talked about factory function. That was also a technique. In this video we will talk about a new technique, that is a deconstructor technique. As the word the deconstructor suggests, we are about to do something that is called a refactoring, a destroying or re-editing. So on the board you will be seeing an example of a reduced factory function. Factory function, yesterday we saw an example on the board. It was comparatively a bit more complicated in terms of the property used. There was a method also used, but here we don't see a method in our object. Do we? No, right? There's no method. There's two simple properties. Before we move further, let me tell you what it does. So we have created monster factory named function which has two parameters, name and age. Name and age are the parameters of our function monster factory. Inside the function body contains a return keyword, or say a return statement from here to here, which includes returning an object. Can you see here? We are trying to return an. Inside the object you will see two key value pairs. First key value pair, second key value pair. Each key value pair makes a property. We have two properties. You can also notice that the key and the value pair contains same key and value respectively. Now what happens when we try to invoke this function with certain arguments? Arguments are basically the inputs from our side on the parameter. So in place of name we have inserted Sadaf, and in place of age we have inserted 21. Since there is no console keyword here, just a return keyword, but we want to see the result that it worked or not, so we are using console.log on the last line, and inside the console.log statement we see that we have put monster factory, our function's name, with two arguments, that is my name and 21, as I said before. So what is the expected output? What will be shown in our console, this black region? क्या output आएगा? The output would be Sadaf, as simple as that, and with a second line here, 21. So what's the point? The point is very obvious. We are learning deconstructing technique, right? It's a technique, as I told you. So we will I'll try to show you something. I'm trying to refactor something here, that is, we are trying to remove this name and remove this age key from here, or say. So what do you expect? You expect it to show some error, right? Since it has to be in key and value pairs, and it's not it's just the key, or say just the value is written. This object should contain key and value pairs, but the value or the key part is missing. We are not clear about which part is missing here, but I can tell you that the key part is missing here. Just contains the value inside the object. And it's not that key name is not defined or age is not defined. Oh, you think it is not defined? It's not true. Since we are talking about value, this value will be pointing towards our local variable, that is name parameter. So basically, what would be the output now? What do you think? What would be the output? Surprisingly, the output is same, Sadaf and 21. Like what? Yeah, no problem. You see there is no problem with the output. So basically, were we writing those keys extra? Those were not necessary. Yeah, so this is basically a shorthand method, a shortcut method, to insert new properties inside our factory function. You see, we are saved from the tedious task of writing the keys again and again and again. Hopefully this video made some sense, that how to deconstruct, or how to edit an object in such a way that we are able to execute, or we're able to insert as many properties as we want. Mention them here, or simply just mention them. Well, mention them here and then mention them just twice. That's it. Your property has been created. That's it. Hopefully this video made sense. So now we will be shifting towards our laptop. This video is very short because that's all it was to the technique, deconstructing technique in JavaScript. This is only available in ES6 versions, and some of the browsers do not support it. I think Internet Explorer doesn't support this kind of technique of just removing the key and simply inserting, the parameter's name as a form of property in an object. Hopefully it made sense.
Hey guys, what's up? Welcome back to this brand new video. मेरा नाम है सिताफ हाशमी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक JavaScript with the help of codecademy.com. I've not been sponsored by codecademy.com for sure. Basically, I love this website. I have learned basically everything from codecademy.com and also from freecodecamp.com. That is freecodecamp.com. That is freecodecamp.com. This is freecodecamp.com JavaScript. So I have learned from here too. But I would recommend this more. Codecademy.com. This more interactive. In a sense. So okay. So yeah. So basically our lecture will be divided in 3 parts. Number 1 part would be reading. Second part, examples which you have gone through on the board. So I'll not be going deep into that because we have already gone deep into that. You see the board, that side? Yeah, we have gone there deep. And last would be following an instruction and yeah, and solving some of the community forum questions. Doubts. Not questions, yeah, doubts. Let's get into this. So, ES6 introduced some new shortcuts for assigning properties to variable known as distracting. So, ES6 basically introduced some new shortcuts. ES6 basically ECMA6. Okay, what does ECMA6 mean? Look, ECMA. This is basically version of JavaScript, 2015 version of JavaScript, ECMA. Scripting 6, something like this. ES6 or ECMA. Gamma scripting CMA. ESMA नहीं ECMA. So basically ECMA script basically okay, there are different versions of it, but the biggest leap. Okay, got that page. So here is that page. So basically ES version ECMA script version 1 was 1997. 1998 में आया ES2. Basically ES6, right? ES6. This is ES6. This is ES version 6. 1, 2, 3, 4. अच्छा 4 was missing. 4 जो आने वाला था वो आया नहीं था for some reason. उसके बाद 5th version आया. उसके बाद सीधा 6th version आया. ठीक है? That's why ये continuously if you number them you will not get कि 1, 2, 3, 4 ही तो होता है. ECMA version 4 होगा ये. नहीं, ECMA version 5. ECMA version 6 को बोलते हैं हम लोग. सॉरी ECMA वर्जन 6 इसको जैसे कंप्लीट मैन तो बिगेस्ट डेवलपमेंट ECMA 6 में है. उसके बाद देखो ऐसे रह गया. यू सी व्हाट आई मीन. तो बेसिकली ECMA 6 में ये नया तरीका आया है, इंसानी तरीका, दैट इज डिस्ट्रक्टिंग. बेसिकली व्हाट इट डज, इट हेल्प्स अस टू असाइन प्रॉपर्टीज टू वेरिएबल्स. ठीक है. सो या अच्छा एक चीज बता, तुमको पता है ना ये जैसे यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है. सो जूम करके दिखाता हूँ. ये दिख रहा है यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया, राइट? ये फंक्शन है, राइट? ये फंक्शन में क्या होता है? पैरामीटर्स. तुमको पता है ना पैरामीटर्स वेरिएबल होते हैं, पता है ना? लोकल वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है. किसके लिए? उस फंक्शन के लिए. इसका वजूद आउटसाइड दिस फंक्शन नहीं एग्जिस्ट होता. ठीक है. लोकल होता. समझ में? सो इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस वी हैव क्रिएटेड फैक्ट्री फंक्शंस दैट हेल्प अस क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. वी डिड, राइट? फैक्ट्री फंक्शन में भी करते ना पैरामीटर्स, यानी उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते थे? वैल्यू की तरह यूज करते थे. किसके? वैल्यू की तरह. फंक्शन बॉडी में रिटर्न कीवर्ड के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू की तरह यूज करते थे. याद है? टू रिमाइंड आवरसेल्व्स हियर ट्रूनिकेटेड मतलब शॉर्ट रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ आवर फैक्ट्री फंक्शन. जैसे मैंने बोर्ड में बताया था यार, मतलब ये छोटा सा इसलिए मैं समझा देता हूँ कि जैसे मैंने बोर्ड में बताया था कि एक्स्ट्रा मेथड ज्यादा प्रॉपर्टीज थे ना, तीसरा एक मेथड भी था प्रॉपर्टी के साथ साथ. तो दिस इज रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ आवर फैक्ट्री फंक्शन. बात वही है कि चेंज द आर्ग्यूमेंट्स, you get a different object every time. That's it. So imagine if we had to include more properties. Okay? More properties we wanted to introduce. Not more objects, not the entire thing. Just more properties in this. That would quickly become a very tedious task, right? Very hard task, very painful task. But we can use destructing technique. I've been saying it's all wrong. Destructing technique, but deconstructing technique I have been saying. But deconstructing and destructing sound same to me. But what about destructing technique? Deconstructing ज़्यादा सही लगता है मेरे हिसाब से, rather than destructing. Called the property value shorthand. Called property value shorthand. इसको क्या बोलना है? Property value, PVS, not PVC. It's PVS, property value shorthand. को destructing technique भी बोलते हैं. Property value shorthand. मानी प्रॉपर्टी का बस वैल्यू लिखना पड़ता है यहाँ पे ध्यान से देखो आप. तो अजीब तरह से मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है. ये ऑब्जेक्ट यहीं पे चल सकता है, बाहर में ऐसे लिखोगे आई मीन बिना की का तो एरर बताएगा, बोला कि अनएक्सपेक्टेड टोकन. समझ रहे हो? ये यहीं पे इसी
फंक्शंस के अंदर ही एग्जिस्ट कर पाता है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉरी इस फॉर्म में जहां पे बस वैल्यू लिखा हो। तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड, तो सेव आवर टाइम फॉर की स्ट्रोक्स, मतलब कम लिखना पड़े इसलिए। तो ऐसा बेसिकली वर्ड करता है। देखो क्यू को हटा दिया, की को हटा दिया, बस वैल्यू को लिख रहा है जैसे मैंने बोर्ड पे बताया। ठीक है, नोटिस दैट वी डोंट हैव टू रिपीट आवरसेल्व्स फॉर प्रॉपर्टी असाइनमेंट्स। लास्ट में हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस में बार बार यहाँ पे रिपीट करते थे ना, जैसे नेम आया तो नेम लिख दिया, एज आया तो एज लिख, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपली की को भी हटा सकते हो अगर आप उसको फंक्शन के अंदर लिखते हो। सब कहाँ पे अवेलेबल है, ES6 वर्जन में अवेलेबल है। हाँ, पहले अवेलेबल नहीं था, पहले एरर दिखा था, पहले ये हार्ड टास्क था। क्या करना, प्रॉपर्टीज को असाइन करना बेसिकली। सो बेसिकली यहाँ पे कोड दिया गया है, कोड ये लिखा गया है कि यूज द प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड, that is destructing technique, which I call deconstructing technique for some reason, and refactor the factory function in the main.js इसमें refactor मतलब edit करना कहता है। किसको edit करना है, इसको edit कीजिए आप इस तरह से कि इसमें आप शॉर्ट वैल्यू मेथड, प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करो, या फिर डिस्ट्रक्टिंग मेथड का, डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक कुछ नहीं होता भाई, की को हटा दो बार बार, बस वही की को हटा दो, बस हो गया, सही है। था रन हो गया। सो बेसिकली रन हो गया, देखो आउटपुट आ गया, देख रहे हो। पहले भी सेम ही आता, देखो की के साथ भी रन करते तब भी सेम आता, बिना की का रन कर रहे हैं, अभी हटा दिया मैंने तब भी सेम आ रहा है। दिखा था नहीं या नहीं दिखा था नहीं, होपफुली मेड सेंस, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आई लव यू सो मच दैट आई डाइड। बाय बाय।